what is cloud और क्यों हमें जरूरत पड़ी, why do we need it? Before we go into these questions, let us understand before cloud how the deployment was taking place. So let us say, so that you have an understanding about this, imagine that there is a company, एक company है, दो लोगों ने बोला कि we want to start a company for software development, okay, and they had X amount of money to get started, okay. So they said, if we want to start a company for software development. Okay. Then they said, okay, if you want to start a company for software development, and this is the amount of money we have. Let us say we have 10 lakhs. Okay. 10 lakh amount of money they have to start with. 10 lakh rupees. Okay. And we want to start a company of software development. They say for doing a software development work, we need to hire some employees. Employees what? Software developers. They said, okay, the minimum software developers that we need or the engineers that we need are 5. How many? 5. Okay, fine, 5 engineers. But even before hiring these individuals, what do they need? They need an office. They need an office. Now, what does office means? That means they'll have to go in the market and look for a place which is of a certain size. They may have their own building or they may have to go and rent it out. Okay. So let's just say they rented it out, which is sufficient enough to take the two start the managers who wanted to start the company and the 5 employees. 7 people can go in this building. Okay. Now the building space is available now. What is next thing required? This needs to have electricity. Second thing, it needs to also have water. Third thing, it needs to have internet connection. These are the most basic things that need to be available in this office. After these things are available, then they need to build furniture, table and chair, where these individuals can sit. 5, 6, 7. 7 individuals can sit. So these are what? Table and chair. Now, that is not enough. Once the table and chair are there, what do you need? Computers. Now, when we have computers in there, suppose there is a computer here, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. All these computers are there. These need to be connected to the LAN. And somebody needs to be hired for maintaining this. So not only do they need the 5 software engineers, they also need to hire a system or LAN administrator. Admin. Yes or no? So far so clear? Yes, sir. Okay. Okay. Now the next thing is all thing is going after a year.
whenever whatever software they are selling, जो भी बेच रहे हैं, it is selling very wise, and the customer comes and says, gives additional project to the company, right? They have a meeting with the two owners, the managers, and the customer says, we are really impressed with your work, हम आपके काम से बहुत खुश हैं और हमें और काम चाहिए आपसे, और काम देते हैं. नाउ उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन मोर वर्क? दैट मीन्स द कंपनी इज डूइंग गुड, द कंपनी नीड्स टू ग्रो. Yes or no? Yes, sir. And for growing, will the 5 people work, or do they need to hire more? So they have to hire more. And is there space remaining in this building? No, right? No, sir. So that means the option that the company has is either to go for a bigger space, and Yes, sir. imagine that if they were having this space initially and now they have to move into this space. Generally, whenever you are signing a lease or जब आप उसे रेंट पे ले रहे हैं, so there is always a contract for 1 or 2 years. Is it easy to migrate from here to here? No, sir. No. So let us just say that somehow this was a challenge of moving from one place to another, but they went through the challenge and then they got a bigger space, and now they are splitting what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and let's say 10. 2 original managers, 5 initial engineers, 6 administrator, total of 8, and 2 more engineers. Okay. So what did they need to add? 2 more computers. Yes or no? Correct? Plus, Yes. now with these increase of 2 more individuals, do you think the electricity charges will be increasing? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The water utilized will also increase. Yes. Right? And then somebody they'll also have to hire, उनको और एक पर्सन को हायर करना पड़ेगा जो कि इसको सफाई भी करे. हाँ, so these are overheads, sir. right? Continuous overheads. And Yes, now sir. let us say for some reason after 6 months, because of some bad incident, some bad thing happened, the reputation of this company goes bad. क्या हो जाती है? इसकी इमेज या रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है. And the customer say we are no longer going to do business with you. Then what happens? अब क्या हुआ? ये इनको ये लॉस में जाएंगे, हाँ कि नहीं? They will go Yes, start sir. going in loss because they are no longer getting any business. Yes, sir. So और उनके बाद ये होता है कि बोलते हैं भैया हम इस बिजनेस को बंद कर देते हैं. तो फर्स्ट थिंग दे स्टार्ट डूइंग इज ले ऑफ. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ले ऑफ? Yes, sir. मतलब एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालना शुरू करते हैं. ठीक है, नौकरी से निकाल दिया, चलो ठीक है, निकाल दिया. सेकेंड थिंग इज, अब जो ये यहाँ पे जो कंप्यूटर रखे थे वॉट एवर, दे हैव टू गेट रिड ऑफ देम आल्सो, सेल देम. यस. अब ये जो यूज्ड कंप्यूटर्स हैं इनकी कुछ वैल्यू होगी क्या? चलो मान लिया हो गई, पर कम होगी ना. Yes, sir. तो औने पौने दाम में बिकेंगे. Yes, sir. ठीक है, तो लॉस हुआ. फिर सेम चीज और फर्नीचर, कोई लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फिर जो रेंट लीज थी उसे भी तोड़ना चाहेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो ये एक चीज अपन ने ये देखी, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to have a good amount of budget, and then you also need to have flexibility of
having space for sitting n number of people, so that growth can be seen, can be achieved. पर अगर if you are not able to do that, then to transition from one place to another is not easy. And with additional computer adding, additional sit adding, it takes another extra money. ठीक है क्या? इसी Yes, सिनेरियो sir. को एक और चीज लेके चलते हैं कि लेट्स से the initial folks were how many? 1, 2, 3, 4, 5. 5 engineers, 2 managers, and a system administrator. They were there. They are continuously working for 3 years. अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ, लिमिटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. 3 years they have been working, and they all had a laptop. But in 3 years, technology changes, advance हो जाती है. What? Technology changes. और ये जो लैपटॉप्स हैं, they are not able to perform the same way that with the new technology they want. जो फीचर्स चाहिए नए नए डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो उन लैपटॉप में क्या है, वो फीचर्स नहीं है, दम नहीं है कि उसमें काम आ सके. तो इस कंपनी के पास क्या ऑप्शन रहा? फिर से पूरा खर्चा करो नए लैपटॉप खरीदने में. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये एक और लिमिटेशन आ गई कि पहली बात तो ग्रो नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते. तो इसका तोड़ जो है, इसका जो रिटर्न है, ऑल्टरनेट तरीका है कि क्लाउड में काम किया जाए. राइट, क्लाउड में काम किया जाए. और क्लाउड में जैसे अभी अपन देखना शुरू करेंगे, व्हाट विल सी इज डिपेंडिंग ऑन. तो उसमें क्या मॉडल होता है? पे पर यूज, पर यूज. और या कुछ लोग ये भी बोलते हैं पे एज यू यूज. फॉर एग्जाम्पल, a company can open a AWS account and can start a VM and give it to employee 1. Okay. If another employee joins, another VM can be brought up. Employee 2 can start using it. And similarly, depending on how many employees join, it is very easy to bring it up and assign it to the employee. Okay. Yes, sir. So they are able to quickly scale. क्या चीज हुई? क्विकली स्केल अप. स्केल अप का मतलब क्या होता है? कम मात्रा में था, अब उसे बढ़ाना है तो स्केल अप. ज्यादा मात्रा में कम करना है तो क्या यूज होगा वर्ड? आपका उल्टा क्या होता है? Scale down. राइट. फॉर एग्जाम्पल, ये अपन ने बोला कि यहाँ 5 एम्प्लॉय थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां. अब उन्होंने बोला कि फॉर सम रीजन वी डोंट वांट टू एम्प्लॉयज. क्या एसवीएम को बंद कर दो, इसको ही बंद कर दो. what were these virtual machines, right? तो पहले 5 एम्प्लॉय थे तो 5 वीएम चल रहे थे, इसलिए 5 का पैसा दे रहे थे. अब क्योंकि सिर्फ 3 बचे हैं तो इसको बंद कर दो और क्विकली स्केल डाउन कर लो. समझ में आई ये बात? Yes, sir. तो ये क्या हुआ? क्विकली. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चीज जो अपन ने एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल बोला था कि 5 लैपटॉप हैं और 3 साल बाद उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. तो आप क्या करो? पुराने वालों को बेचो, फिर नए वाले खरीदो. ये भी एक हेडेक है ना. इसके बदले क्लाउड में ये फीचर होता है कि आपको जो चाहिए
आप चलाओ, नहीं चाहिए ये तीनों तो बंद कर दो और नए वाले आप ले लो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक और चीज बताओ कि आप पहले क्या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे? हाँ कि नहीं? तो वहां काय का खर्चा था? Electricity. दूसरा Rent. वाटर, रेंट. थैंक यू, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. और वाटर मतलब बाथरूम या किचन में वाटर यूज करने की जरूरत है, रेंट है. एक एम्प्लॉय वो करना पड़ेगा, किसके लिए? Cleaning employees. क्लीनिंग एम्प्लॉय. Sitting arrangement. हाँ, इज इट अगेन? Sitting arrangement, furniture वगैरह. सिटिंग अरेंजमेंट, ऑल दैट, दिस वर ऑल एक्सपेंस, राइट? करने के लिए. अब इसके बदले अगर आप इमेजिन करिए कि अपने कंपनी ने बोला कि वी आर ऑल गोइंग टू वर्क रिमोटली. You are sitting in your home working. You are sitting in your home working on your chair, home sit. So is the company paying for your electricity? Yes, sir. No, No, sir. right? कंपनी के लिए सेव हुआ ना. Hmm. Yes, sir. आपने लैपटॉप लिया हुआ है, लैपटॉप से आपने क्लाउड में लॉग इन किया तीनों ने, और उसमें काम कर रहे हैं. समझ में आया? Yes, sir. So Yes, does sir. this clarify the concept? Why? What is the advantage of cloud? How quickly we can change things in cloud? Okay, concept wise, right? We'll start doing the practicals now, but is this clear? कि क्यों, कितना इसलिए इफेक्टिव क्यों है, कंपनीज पैसा कैसे सेव कर रही हैं इस चीज में, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Mm. अब अपन we'll start moving towards, we'll log into AWS. Okay, and we will, okay, let me tell you first what are the things that we'll do today. First of all, we will log in to the account. Okay, I'll show you how it looks. Then we will log out from the account so that you get into the habit of how login and log out work. जब आप लॉग इन करते हो तो आपको क्या दिखता है, हाउ डज द डैशबोर्ड लुक. Second thing next to that, after doing that login logout, was we will create a VM. What will we create? VM. Okay, we will look at the high level steps of creating a VM. Today we will not go into the details. If time permits, then we will go, otherwise we will see how to create a VM. In AWS, VMs are known as EC2s, Elastic Cloud Compute. E, first C and second C, EC2. So question to you, if I am saying in AWS I have to bring up a VM, what is the other way we can say, what else am I bringing up? Instead of saying VM, what am I bringing up? EC2. Correct, right? I am bringing up an instance of EC2. Instance matlab, for example, in VirtualBox, remember VirtualBox? Yes. We could bring up one VM, first, second, and more. Yes or no? Yes. Yes, sir. So in AWS, this becomes first EC2. This is another EC2. This is a third EC2 instances. Okay. By the way, Shreya, are you there? Yes, sir. All right. So let's take an example of Shreya also. So Shreya has been struggling in installing VirtualBox and Linux in her laptop. Okay.
and there can be n number of reasons why she is struggling. One could be that her laptop is not that powerful that it can support bringing up a virtual machine. Yes or no? There's quite a possibility. Yes, तो sir. ये वाला एग्जाम्पल भी तब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि why was she trying to bring up a VM? Because she was trying to bring up a Linux VM because she wanted to, वो Linux सीखना चाह रही थी, पर नहीं सीख पा रही कर पा रही थी प्रैक्टिकल, क्योंकि उसका चल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या है, AWS में अपन लॉग इन करेंगे, वहां पर लिनक्स का VM चालू करेंगे, ठीक है, वी विल स्टार्ट एंड शी कैन वर्क ऑन दैट। ओके, तो दिस इज अनदर फ्लेक्सिबिलिटी। और जब व्हेन शी इज डन विद इट, शी कैन सिंपली डू व्हाट, स्टॉप इट और डिलीट इट। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? No, sir. No, sir. ठीक है, so let's get started. Okay.